Just good. Okay. It's changing in life. So now 60% people are working and 40% are students. But anyway, I think it may keep on changing with in next few minutes or everything. But what I wanted to get an idea is that I want the questions from everyone when we'll be discussing around productivity, some hacks, some practices. There are some things which would be very useful for students depending on their work schedules and depending on their work environment. Similarly, for the working professionals. Okay, so let's start this. So, hi, I'm Bhuvnesh. Um, I have an experience of 8 years working in startup industry. Why I'm doing this, why I'm creating the this kind of a content on Creator. It is because of my journey that has been through a lot of ups and downs, and it has been very rewarding, though very at a lot of points though difficult. But I have learned a lot of um, perspectives, and I have started seeing life in a different way, and I wanted to share my experiences with everyone. I wish someone had told me this around 6 7 years back on how to do certain things and what kind of challenges you might face in future. So that's what I'm here to do. Overall, I graduated from IIT Delhi in 2014. I was a chemical engineer, and then I joined Oyo Rooms after that when they were very young, and I started my own company in 2016. I ran it for 3 years, then sold it off, and then I joined another company in biomedical sector. Worked there for 2 years. Now, why I'm telling you all this is because this journey has been from one place to another where I've learned a lot. I've gone through my own mental health journey. Yesterday was World Mental Health Day, and I'm glad that this topic is here today because we'll be discussing a lot of sort of things in today's session. In 2021, I took a break. I wanted to make sense of my last 7 years and wanted to see that what I really want to do now for next 20, 30 years. What will make me stick at one place where I can feel a sense of contentment, a sense of meaning in the work that I do. And there were a lot of things that I figured out. As of now, I changed my career last year. Now I'm into the well-being space. I work with working professionals, with companies, and help their people in improving their mental well-being through Western methodologies and Eastern methodologies. And we'll be talking around these practices, which is a mix of Eastern and Western. What is Eastern Western? So Western is more around the how the science has developed around psychology, around cognitive science, and what are different practices that come from there for people like us. And secondly, it's around the Eastern practices come from our Indian traditions, which is our ancient wisdom, whether we call it yoga, whether we call it our Vedanta philosophy, where we call it Buddhist philosophy. What are all the practices, the mindfulness practices? So all this is all right now. I work with companies, I work with individuals, and I help them get to those practices. This is what we'll be going today. Let me go to the chat box and mm, see if somebody has. Yeah. So Mahit is saying, is work stability important for you, like the location and company? Okay, so good question, Mahit. If I tell you my last 3 months, I have been moving from one place to another. Like I have changed 3 to 4 cities. I don't have a stable base as of now. It's like a digital nomad kind of a life. But when you say is that important, I would say yes. Work stability, like location and company, are definitely important. Might you're saying that's so good, but um, it is depends on the experience. If you see that experience um as what you take out of it is um, it depends on different perspectives, I would say. But overall, what I have realized over my past 3 years is that having a stability just for the sake of, no, I want to be stable, so that's why I need to have this location, or I want to be stable in a company, so let's stick with this company. Even if
And that really gives us a very good point to get into our today's discussion, and that is that a lot of us, for the sake of, let's say, security, or maybe for the sake of, let's say, if Mahit said that, hey, we should have stability in our lives, so let's stick with one company, or let's stick with one location, or maybe not change it too often. And sometimes, even if we are suffering in such situations, or if there are some kind of effects that we are having on our own um uh, bodies, or on our own minds, or on our own lives, we still stick to it. That I would not say that for the sake of stability we should do something stable. And that's from where the concepts like burnout and mental health issues that are coming up, a lot of these things are coming up in our recent times. So let's get into it. Pratap is saying maybe you have too much of that experience. Sumit is saying, yeah, that's better. Pratap, I don't get that. What you mean? Maybe you have too much of that experience. Yeah, if you mean that I have too much of experience of moving from one place to another, yes, that is there. I've taken it as experientially, and it has helped. Uh, but I do think once you get a meaningful or purposeful job, I would want to stick at that place. And that's when I said that in 2021, when I took a break, I wanted to have a sense of stability for next 5 to 10 years at least. And so that's on. But to be able to design that, to be able to do that, is something we should focus on. Maybe that's why you don't want to anymore. Okay. Yeah. uh, yeah. Okay. So let's talk about the concepts right now around burnout. So is everybody aware of burnout? What do they mean? I'm happy to see some of your comments on what you think burnout is, or what has your experience being of feeling that, hey, I'm burnt out, or I don't feel like doing things. Like, how do you associate that burnout with your personal experience? Would love to know that. And then we can also talk about how scientifically, or how researchers are, or in workplace psychology, how is that understood. And that would give us a different perspective, and that would also give us a new way of seeing burnout. So if you have any comments, please put it there. Let me quickly tell you a very common and a very simple kind of a definition to understand burnout. And I'm reading this from one of the articles which I liked. So this is, so burnout, or whether that is a job burnout or whether that is an academic burnout, is a state of physical or emotional exhaustion that also involves a sense of reduced accomplishment and loss of personal identity. So there are two very important things. One is, in fact, three. One is that this is burnout is comprised of a state of physical and emotional exhaustion, that on everyday basis you feel exhausted, even if you might have not done a kind of a work which you might, एक होता है ना when आपकी लाइफ में अगर ये दो डिस्टिंक्शन रहे हैं, कि एक डिस्टिंक्शन का भी आप, जब आपने बहुत, आपको बहुत मजा आया किसी काम को करने में, एंड इवन आफ्टर डूइंग आवर्स एंड आवर्स ऑफ दैट वर्क, यू माइट हैव नॉट फेल्ट एग्जॉस्टेड, यू माइट हैव वांटेड टू यार और करना है काम। ऐसा कभी फेज आया होगा, हो सकता है अभी चल भी रहा हो, या हो सकता है अभी आपके वो फेज नहीं आया हो। बट जिन लोगों की लाइफ में ये फेज आया है, दे वुड नो दैट एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ फिजिकल इमोशनल एग्जॉशन जो है, अगर आपके अभी करेंटली चलता है, जब भी आपने ऐसा कुछ फिजिकल काम नहीं किया है, आपने कोई मेंटली एग्जॉस्टिंग काम नहीं किया है, दैट इज वन ऑफ द साइन दैट burnout is something that you might be facing. Also, it involves a sense of reduced accomplishment. अगर आप दिन भर में कुछ काम भी कर रहे हैं, तब भी I'll read the comment boxes. I just switched to the comment and I saw there were a few comments, but I'll complete this. So अगर आप, उसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि even let's say when you're doing some work, you are not really feeling accomplished कि यार मैंने किया ही क्या आज. And I'm talking this from my personal experience when there was a phase of, and this ran for 1.5 years. I didn't even know कि मैं शायद इस चीज से गुजर रहा हूँ, क्योंकि I would feel
very exhausted, जैसे कि एनर्जी नहीं है. बेड पे आया, बेड पे लाइक घर पे आया ऑफिस से काम करने के बाद, एंड घर पे आया एंड आई वुड जस्ट लाई डाउन. What I would still keep on doing is, let's say, अगर टीवी चल गया है या अगर फोन पर if I have to watch something for entertainment or anything, for that my body or my mind is kind of active कि हाँ ठीक है कुछ कुछ चल रहा है, there's some kind of a feeding in. But in general एक feeling of exhausting कि कोई और घर का भी काम है या कोई और relationships related कोई काम है या किसी भी टाइप का, अगर मेरे जो connections हैं किसी के साथ मैंने बना रखे हैं, चाहे फैमिली के साथ है, फ्रेंड्स के साथ हैं, they all suffer a lot of, उसमें लगता है कि बहुत एनर्जी जा रही है. You start feeling that you don't have energy to give to any other kind of task that you have. Second is also reduced accomplishment, that even if you might have done good, you would always be cynical about your own work and about others. एक नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड जो है, अगर आप अभी अपने पढ़ाई कर रहे हो, या लेट्स से इफ यू आर गोइंग टू कॉलेज, और इफ यू आर इन अ कोचिंग सेंटर, एंड मे बी यू आर competing, एंड उधर अगर आपको एक एक किसी टाइप का माइंडसेट लग रहा है कि यार मेरे साथ ही कुछ पीपल आर, मे बी द टीचर इज नॉट गिविंग दैट अटेंशन टू मी जो मैं डिजर्व करता हूँ, शायद मैं अगर कुछ अच्छा भी करता हूँ तो लोग उसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं. And it might be possible also, but जब ये completely for every part of, for every aspect of your life you start feeling, then this is where this burnout thing is coming. कि आपको अपने फ्रेंडली रिलेशंस में भी ये लगने लगता है, आपको अपने फैमिली रिलेशनशिप में भी ये लगने लगता है, या डिफरेंट अदर चीज़ों में, और आप कुछ भी काम करते हो यू आर सिनिकल अबाउट इट कि ठीक है तो क्या हो गया, व्हाट इज द बिग डील, बिकॉज मुझे कुछ और करना है. लाइक यू आर ऑलवेज ट्राइंग टू अप्रोच समथिंग एंड यू फील कि नहीं मैंने इतना तो कुछ एड ऑन कुछ ऐसा काम तो उसमें किया नहीं है टू बी एबल टू डू समथिंग आउट ऑफ, टू बी एबल टू से कि यार हाँ मैंने कुछ अकॉम्प्लिश किया है. एंड थर्ड इज अ लॉस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी, जो खुद के साथ एक टच बेस है, लाइक द लाइफ दैट यू आर लिविंग विद योर ओन सेल्फ, देयर इज अ डिसएसोसिएशन दैट हैपेंस, बिकॉज इट्स लाइक कि लाइफ जो है वो एक ऑटो पायलट पर चल रही है. It's going on an autopilot. You'll wake up every morning, you'll go to work, you'll work whatever work you're doing, you're completely exhausted, mentally exhausted. You'll attend meetings, I'm talking for working professionals here, you'll attend meetings, you'll meet people, you'll take a few tea breaks, coffee breaks, and then you'll try to rejuvenate yourself, you'll do some work, then your focus will waver, there'll be a lot of distractions, your mind will try to find distractions from doing the actual work that you want to do. You will start you will start seeing that procrastination is something that is really coming up in every aspect of my life. मैं कामों को टाल रहा हूँ, कामों को टाल के इसलिए रहा हूँ क्योंकि आई एम थिंकिंग कि यार ये बहुत हार्ड है और मेरे पास एनर्जी नहीं है इसको करने के लिए. तो ये क्या है, बिहेवियरल सिस्टम जो हमारा खुद का हमने बनाया होता है उसको कंप्लीटली चेंज करने लगता है. एंड योर पर्सनल आइडेंटिटी विच इट माइट हैव बीन बिफोर, उससे उसके साथ एक बिल्कुल मिसमैच होता है. सो देयर इज अ कंप्लीट लॉस ऑफ दैट पर्सनल आइडेंटिटी दैट यू माइट फील एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. So this is what burnout is that you can understand in that way. I'll read the comments. If anybody has to write something, please write to it. Vishnu, after exams usually. No, during exams. So Vishnu, you are saying that during exams you feel burnt out. Is I'm understanding that, and uh, I'm not sure if these are the exams you're talking about, schools or college or any of it, but this is totally valid what you have said. And आई थिंक प्रोक्रेस्टिनेशन ऑल्सो प्लेज अ रोल, अ बिग रोल इन दैट, क्योंकि वो हमारे एक बिहेवियरल सिस्टम में आ चुका है कि ठीक है एग्जाम की तैयारी, उसको मे बी एट द एंड ऑफ इट हम तैयारी करेंगे, एंड बाय दैट इट इज़ अ लार्ज पाइल on which it puts a lot of stressors on us. बहुत सारे स्ट्रेस की ये भी करना है, ये भी करना है, ये नहीं हुआ तो ये नहीं होगा, and there are a lot of fears, worries, and yeah, it piles up a lot, and emotionally you are very exhausted, and this mentally exhausts you. और फिजिकली बेचारी बॉडी, अगर अगर मैं बॉडी को लाइक इफ आई, हमारी आइडेंटिटी को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूं, एक मेंटल और एक फिजिकल, तो आई थिंक बॉडी जो है बहुत ही प्यारी सी चीज होती है, वो बहुत सफर करती है आजकल, क्योंकि बॉडी के अंदर तो बहुत एनर्जी है. बॉडी तो करना चाहती है, बॉडी तो एक्सरसाइज भी करना चाहती है बिकॉज इट नोज इट इज गुड फॉर इट. बॉडी तो डाइट भी लेना चाहती है अच्छी बिकॉज इट नोज इट इज गुड फॉर इट. बट what actually in the end is ends up controlling is our own minds which control
अगर माइंड को क्रेव हो रहा है कि मुझे कुछ इस टाइप का, आई हैव टू ईट समथिंग विच आई राइट नाउ नीड, मुझे क्रेविंग हो रही है, so body knows it is not the feeding system for it. So what I'm trying to say here कि even with all that mental exhaustion that comes, so इधर एक factor जो आता है which I think everybody should note down right now, एक एक टेक अवेज हम इसमें से लेते चलेंगे कॉन्वर्सेशन में से. सो एक टेक अवे जो हमें क्लियर मिल रहा है कि कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेंथ जो है और इमोशनल स्ट्रेंथ जो है वो कॉम्प्रोमाइज होती है, which means that somehow we might need to work on that. That is one thing. It affects body, it affects our lifestyle. हमारी लाइफस्टाइल सेडेंटरी हो जाती है, वी स्टार्ट गेनिंग वेट और वी स्टार्ट हैविंग सम काइंड ऑफ फिजिकल इश्यूज, वेदर दे आर डिजीजेस और वेदर दैट इज डायबिटीज जो कि प्री डायबिटिक होकर के चालू होती है, और डिफरेंट अदर थिंग्स. एंड दीज आर द रियल, यू नो, दीज आर द रियल कॉन्सिक्वेंसेज दैट हैव. बाकी सारी की सारा जो क्लटर आई वाज टेलिंग कि ऐसा होता है ऐसा होता है ऐसा, इन द एंड उसका असर किस पे हो रहा है? उसका असर आपकी बॉडी और आपके दिमाग पे हो रहा है, इन द एंड आपकी लाइफ पर हो रहा है, आपके एग्जिस्टेंस पर हो रहा है, which will not help you live a happy life, or a life that you would want. कि आप हमेशा स्ट्रगल करते रहोगे, आप सोचते रहोगे कि यार मुझे करना है. सो इट्स अ काइंड ऑफ अ विशियस साइकिल दैट यू, देयर इज अ लॉट ऑफ बर्नआउट, देयर इज अ लॉट ऑफ दैट सिस्टम इज ऑलरेडी इन प्लेस. आप बहुत ट्राई कर रहे हो बट आप ऑलरेडी बहुत एग्जॉस्टेड हो, आपके अंदर एनर्जी नहीं है, यू विल नॉट बी एबल टू डू द वर्क दैट विल help you go reach somewhere or grow. You will come disappointed, you will crash, then you will think अरे यार I'm not able to live. You will not able to live the kind of life that I want to, I'm not happy. You will again try hard कि यार मैं कुछ करता हूँ, you will again fail, you will again try, you will again fail, क्योंकि बॉडी का एक सिस्टम हो चुका है. और इधर ही वहां पर मेंटल एंड इमोशनल स्ट्रेंथ इज वन थिंग दैट नीड्स टू कम इन. Okay, one takeaway. Let me read a few other comments. So, Pratap, it's not feeling content and happy. I think you are answering for what is burnout for you. And I think, yes, on a constant basis, if you are not feeling content or you're not feeling happy, then there is something that is not going on right. There can be several other reasons, बट अगर उन रीजंस में से कुछ ऐसे रीजंस हैं कि अगर आप अपने बिहेवियरल ट्रेट्स देख रहे हो कि आपका एक लेवल ऑफ माइंडसेट जो है वो थोड़ा नेगेटिव हुआ है, दैट यू थिंक कुछ होगा तो गलत ही होगा यार. कई बार लोग बोलते हैं ना कि जो होगा अच्छा अच्छे के लिए होगा. अगर अपना माइंडसेट बन गया है कि यार जो होगा खराब के लिए होगा, अच्छा शायद नहीं होगा, या वी इफ वी फियर विद द फ्यूचर कि आगे फ्यूचर में वी स्टार्ट प्रोजेक्टिंग अ काइंड ऑफ अ पिक्चर कि फ्यूचर में ऐसा होगा, विच इज मोस्टली नेगेटिव कि यार मेरे साथ अच्छा तो होता है नहीं, मैं कुछ अच्छा तो कर रहा हूँ नहीं, and I anyway I do not have any energy, then you start doubting yourself and a whole lot of psychological uh, issues, psychological symptoms start coming up. And burnout is one of those. So एक medical diagnosis नहीं है burnout, but इसका definite it's a step towards different severe mental illnesses. And this is why it has become very very important to be able to identify and to be able to identify the stressors, to be able to identify the environment, to be able to identify different, you know, to be able to identify कि ये कब होता है मेरे साथ या ये क्यों हो रहा है, and what are those steps that I can take to reverse it or to maybe able to prevent it or to be able to manage. And we'll come to that today. I'll read a few more comments. Okay, Dhanush, you don't feel like whatever you did has value. Very very good point, Dhanush. Totally being very cynical about things. मतलब हम अगर if let's say if we are living a life which is जहाँ पर एक level of let's say mental well-being है, and I'm just giving you an example because I have really gone through this and I can see the perspective change कि जब हमारी mental well-being अच्छी है या अच्छी होती है उस टाइम पर even a small like बहुत छोटे से छोटा act, and I'll tell you like even an act of brushing is something that you can find value out of. Sounds weird कि ये क्या बोल रहा है, ब्रश करना है में क्या वैल्यू है? इट इज द वैल्यू दैट यू आर एबल टू प्रोवाइड टू योरसेल्फ. तुम अपने खुद की बॉडी के लिए कर रहे हो, व्हेन यू आर सीइंग इट एज योर ओन personal identity, when you're taking care of your own body. I'm just telling you this as one very very small example that in a
in a good mental well-being state, even small things are seen as value. तो बड़ी चीजों को तो definitely you'll give value, attribute value to relationships, attribute value to the kind of work that you do, attribute value to your own well-being, to world's well-being, to different other things. But अगर mental well-being आपकी अच्छी नहीं है, हिली हुई है, compromised है, then at that point of time you do not feel whatever you did has value. अगर आपने कुछ बड़ा काम भी कर लिया है, तभी आपको लगेगा यार हुआ नहीं, it was not, because you maybe you have some kind of a you know एक कोई पैरामीटर है जो दिमाग में बना हुआ है, जो हम आइडेंटिफाई तो कर नहीं पा रहे हैं, जिसके अराउंड की नहीं मेरा एक ये लेवल है, मैं इस लेवल पर परफॉर्म नहीं कर पाया हूँ, ये लेवल हमेशा बढ़ता रहेगा, ये लेवल का कोई कोई रेंज नहीं है, it is like because you have lost the personal, like you have lost that connection with yourself, with your own goals or with your own meaning कि मैं कर क्यों रहा हूँ या ये क्या है, मतलब what do I derive out of it. So that is very good point there कि जब आप ऐसा करने लग जाते हो then why would you do things. At one point of time you would come at a stage कि यार मैं करूँ ही क्यों, but then that is not an option, because then if you are, let's say if you are studying right now, exams हैं, you can't just ditch and say नहीं मुझे relax करना है या मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, I can't give exams, वो option नहीं है. So it is better to be able to identify that I'm going through something, accept that, and take actions on to take. Mahit, you also have a level of indifference. Mahit, I'll be glad if you can elaborate on this, what you mean, and I can comment on this. Prince says, do you think the feeling of being burnt out can be overridden with strong emotional quotient? Definitely. That's what we were talking about. That mental strength and emotional strength. And I'll club it in one word, which everybody of you might have heard, is called resilience. अगर आपने अपना resilience build कर रखा है for such situation, for any of these future situation, it will definitely help you override. And we will be doing a few practices today, to to build that emotional quotient, to build that mindfulness quotient, which will in a way affect how your emotional states are, which will help you manage your emotional states. So yeah, Prince, totally, very important point. Mahit, I said you have a feeling of indifference toward things you should be taking seriously. Yes, because as Dhanush had said, कि you're not finding any value towards anything that you're doing. मतलब उसमें कुछ वैल्यू नहीं निकल रहा है, मैं कर भी रहा हूँ तो क्या फर्क पड़ रहा है, दैट काइंड ऑफ अ थिंग कि क्या फर्क पड़ता है, दैट काइंड ऑफ क्या फर्क पड़ता है इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट और अ फ्रेमवर्क. जब हम उसको बहुत पॉजिटिवली यूज करते हैं तो उसके अच्छे रिजल्ट होते हैं. कई बार when we are so much bogged down by society eyes, और सोसाइटी देख रही है और ऐसा होता है ना, चार लोग क्या कहेंगे, and at that point of time a lot of people tell you, a lot of people who have gone through this would tell you कि you should think कि क्या फर्क पड़ता है यार, you're doing it for yourself. But this indifference is very, very different from that indifference, because right now you have lost that personal identity. You are not that what you what the kind of state that we are talking about. Okay, good, really good talking about burnout. I'll just very quickly tell you. There were a few questions. I'll just quote that article. उसमें से I'll ask. I'm just again helping you assess कि कौन सी वो चीजें हैं through which right now you can also identify कि अच्छा ऐसा कुछ चल रहा है क्या मेरी लाइफ में. So yes, this one is counterproductive. Pratap is saying, yeah. Okay, so if you, let's say, ask yourself that have you become cynical or critical at work. Let's say कंपनी कुछ काम कर रही है और उसमें आप like कई बार कॉर्पोरेट्स में होता है ना, this kind of a culture. That's what we say कि कंपनी का कल्चर कैसा है. अगर कंपनी के कल्चर में, and a lot of this burnout comes from the institution that you're in.
it has a big responsibility. But of course on our today's live stream, if we keep aside कि ठीक है institution का जो culture है उसको अगर हम अफेक्ट नहीं कर सकते हैं, ऑफ कोर्स इन आवर सेल्फ अवेयरनेस वी कैन टेक स्टेप्स एंड आइडेंटिफाई कि वेदर आई वांट टू बी एसोसिएटेड विद दिस काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन और नॉट, बट विल कीप दैट आउट ऑफ द स्कोप एज ऑफ नाउ, एंड वील ट्राई टू वर्क ऑन आवर सेल्स कि हम क्या करें यार, अगर मानो दैट्स द गिवन कि ये तो है ही, ये तो ऐसा ही रहेगा, तो हम क्या कर सकते हैं. सो हैव यू बिकम सिनिकल और क्रिटिकल एट वर्क? होता है definitely. Do you drag yourself to work and have trouble getting started? Definitely, because you're like यार मेरे पास एनर्जी नहीं है, और and I can totally relate to each of the point that I am seeing here, and I can I what I'll be reading. Do you lack the energy to be consistently productive? And that's where we also, it opens the door to talk about productivity. Do you find it hard to concentrate? फोकस बिल्कुल खराब हो जाता है. और इधर जो हम बात कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं, वी टॉकिंग अबाउट बोथ आर फिजिकल एंड मेंटल एग्जिस्टेंस. और मेंटल जैसे ही हम माइंड के एग्जिस्टेंस में जाते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड कॉग्निशन, फोकस, कॉन्सेंट्रेशन, आर एग्जीक्यूटिव फंक्शन, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, और वो सब जो है वो इम्पेयर होता है. डू यू लैक सेटिस्फैक्शन फ्रॉम योर अचीवमेंट्स? यस. Do you feel disillusioned about your job or about your future prospects? Um are you using food, drugs, or alcohol to feel better or to simply not feel? Yes, this is a point that a lot of people start using that as a coping mechanism. Coping mechanism क्या होता है कि जब, so basically stress, लाइफ में स्ट्रेस तो आते रहते हैं, राइट? कई लोगों का जो कोपिंग मैकेनिज्म है कि स्ट्रेस आया, जैसे किसी ने एक प्रेशर डाला, अब तुम्हारे पास मैकेनिज्म क्या है उस स्ट्रेस के साथ उसे रोकने का या उस स्ट्रेस के साथ डील करने का. कई लोगों का इसके साथ डील करने का मैकेनिज्म होता है कि उन्होंने एक बिलीफ सिस्टम बना रखा है दैट या जो होगा ठीक अच्छे के लिए होगा, दे विल ट्राई टू सी समथिंग पॉजिटिव आउट ऑफ इट. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टॉक्सिक पॉजिटिविटी कि चाहे आपको अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है बट आप स्टिल बोल रहे हो नहीं नहीं सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, हर जगह आग लगी हुई एंड यू आर लाइक नहीं नहीं ठंड है कुछ नहीं है. ऐसा आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. व्हाट आई एम सेइंग इज दैट अगर किसी ने अपना बिलीफ सिस्टम इस टाइप का बना रखा है, वो उसका एक कोपिंग मैकेनिज्म है. किसी का कोपिंग मैकेनिज्म ये है कि यार बोलते हैं ना कि मुझे जब व्हेन आई फील एंग्शियस, व्हेन आई फील स्ट्रेस्ड आउट, देन आई गो फॉर अ वॉक, आई गो फॉर अ रन. कई लोगों के लिए कुकिंग एक कोपिंग मैकेनिज्म है. बट इन दिस स्टेट जो मैं विशियस सर्कल की बात कर रहा था, होता क्या है कि जब आप थक हार करके, जब आपको लगता है कि मैंने कुछ अकॉम्प्लिश नहीं किया, यू कम बैक at the end of the day. What you start doing is that you start relenting on you start relying on things like जो आपको instant relaxation देते हैं, whether that is alcohol or that is any sort of substance abuse or anything. Because what is happening right now is that is giving you a space, that is giving you something where all of this burden of life that you're carrying with yourself each and every day, आप सोचते हो ठीक है मुझे रिलैक्सेशन मिल गया. बट क्या हमें खुद को आता है कि हाउ टू रियली टेक अ ब्रेक, हाउ टू रियली डिसएसोसिएट योरसेल्फ फ्रॉम द सिचुएशन, हाउ टू एक्चुअली, मतलब कितनी सिंपल सी चीज़ है ना कि रिलैक्स करना सीखो. और हम रिलैक्स करना भूल गए हैं कि रिलैक्स कैसे करते हैं. बॉडी रिलैक्स ही नहीं हो पा रही है, और जब बॉडी रिलैक्स नहीं हो पाएगी तो ये बोथ वे का रिलेशन है. माइंड अगर बॉडी के ऊपर ही डालता है ना अपना इफेक्ट, जो हमने बात की थी, माइंड को क्रेविंग हुई, उसने फीड इन किया, माइंड को क्रेविंग हुई मुझे कुछ देखना है, मुझे नेटफ्लिक्स देखना है, या माइंड को क्रेविंग हुई मुझे कुछ गंद खाना है, माइंड को क्रेविंग हुई या किसी और टाइप की, तो उसका असर कौन झेलता है? बॉडी झेलती है कि बॉडी सो नहीं पा रही है, बॉडी गंदा खाना खा रही है. बट अगर आपने यही इस को रिलेशन को आप रिवर्स कर सकते हो. कैसे? अगर आपने अपनी बॉडी के ऊपर काम किया है तो आप अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हो. एंड वी विल बी टॉकिंग अ बिट अबाउट इट टुडे कि आप अपनी बॉडी मतलब ये वाले रिलेशन को आप रिवर्स कर सकते हो. बोथ वेज है ये वाला. एंड दिस इज अ ब्यूटी ऑफ आवर ओन एग्जिस्टेंस इन दिस वे. Okay, sometimes it's the entire system, Vishnu is saying, that induces burnout. If you mean the system जो complete हमारे आसपास है, then yeah, you're right. How is being an addict in the fashion nowadays? An addict in the fashion nowadays. Pratap, I don't know where you're coming from on this, but if you want to elaborate on this, I can comment on it. But I think if you mean that if like to
to be drinking or to be doing a substance abuse or to be smoking up or doing all that stuff, all those things. Why is it's more like a fashion कि यार मैं ये करता हूँ, and it's like a cool thing to do. If you're saying this, yeah, um, it is for a few people to again, वो एक अलग ही कॉन्स्ट्रक्ट है जो चलता है, जिसके बारे में हम बाद में बात कर सकते हैं कभी. एंड या सो हैव योर स्लीप्स हैबिट्स चेंज्ड? तो सिमिलरली दीज वर द क्वेश्चंस टू असेस कि आपके भी करंट कंडीशन क्या है. अब हम एक बार बहुत ही क्विकली बात कर लेते हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहे हैं हमारे ऊपर. इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये हो रहे हैं कि हमें एक्सेसिव स्ट्रेस हो रहा है और हमारे पास कोई कोपिंग मैकेनिज्म ही नहीं है. अल्कोहल पीना या लेट्स से सब्सटेंस अब्यूज करना, या मे बी कोई और किसी टाइप की कोई बैड हैबिट, स्मोकिंग करना या कोई और. आई एम नॉट पॉइंटिंग इट आउट एज सच कि आप ये कर रहे हो, आप ये गलत कर रहे हो, नॉट. आई एम जस्ट सेइंग कि वी डोंट हैव कोपिंग मैकेनिज्म्स व्हिच आर हेल्दी, so to deal with excessive stress. So we are very instant kind of nature. इसके consequences of burnout दूसरे क्या है? fatigue, insomnia. आप देख रहे हो इसमें एक complete like what do I say about this, कितना कॉन्ट्रास्ट है कि बर्नआउट रिड्यूस करने की सबसे बड़ी रेमेडी जो है वो है स्लीप. गेट बेटर स्लीप and you will feel really rejuvenated, and you will feel a sense of personal identity, you will feel a sense of clarity. but हो क्या रहा है अगर आपके consequence क्या है बर्नआउट का, कि आपकी स्लीप जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है. जबकि ऐसा नहीं लगता है कि यार अगर मैं बहुत थका हुआ हूँ या मैं बहुत ज़्यादा एनर्जी मेरी फील हो रही है कि मैं बहुत फटीग्ड हूँ तो सो जाऊंगा तो ठीक हो जाएगा, बट आप सो भी नहीं सकते हो बिकॉज समथिंग एल्स इज हैपनिंग हियर. This is, your body is really not at rest. It needs rest, but it is not at all at rest. Your mind is not at all at rest, and this is a very scary situation if you look at it that way. You feel more sadness, anger, irritability. आपके अपने colleagues के साथ झगड़े हो सकते हैं, के साथ family हो गया आजकल, something like that. If you are seeing those kind of behavioral changes in you, you might develop a high blood pressure, heart disease, type 2 diabetes, vulnerability to illness. ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि माइंड ने बॉडी के साथ गेम खेला है और बॉडी जो है उसको completely सरेंडर करना पड़ गया. योर लाइफस्टाइल, योर फिजिकल लाइफस्टाइल हैज रियली चेंज. यू डोंट फील लाइक डूइंग, यू डोंट लाइक गेटिंग अप, क्योंकि एनर्जी ही नहीं है. दैट्स द सर्कल दैट यू आर ट्रैप्ड इन. एनर्जी नहीं तो मैं करूँ कैसे? तो मैं करूँगा नहीं तो कुछ होगा नहीं, तो जब होगा ही नहीं तो मैं करूँ कैसे? एनर्जी नहीं, लाइक दैट काइंड ऑफ अ सर्कल. ओके, वेरी क्विकली लेट्स टॉक अबाउट प्रोडक्टिविटी. कि हम प्रोडक्टिविटी के बारे में बात क्या कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी का बर्नआउट से क्या रिलेशन है. बहुत ही क्लियर एंड सिंपल रिलेशन है. प्रोडक्टिविटी का यूजुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो ये है कि, एंड दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग, दैट्स व्हाट आई हैव आल्सो रेड. प्लीज फील फ्री टू राइट व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय प्रोडक्टिविटी, राइट. सो प्रोडक्टिविटी की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि आप जो भी आप समय लगा रहे हो, अपना एफर्ट लगा रहे हो, इनपुट दे रहे हो, आप उस इनपुट के प्रोपोर्शन में वो आउटपुट आपको मिल रहा है. So let's say if you're working today 6-7 hours and you are able to generate something out of those as an output, and you feel कि यार this is something जो मैं काम कर रहा था, जो भी मैं काम करना चाह रहा था, मैं किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था और जितने मैंने ये 4 घंटे दिए, ये इस 4 घंटे से यही आउटपुट आ सकता था. तो वो वाली प्रोडक्टिविटी लेवल्स जो हैं यूजुअली अभी हमें ऐसा लगता है कि यार ऐसा तो अचीव हो जाए तो कमाल हो जाए. बट दिस यूज्ड टू बी वेरी नॉर्मल थिंग. मतलब अगर हमारा इन जनरल लाइफ का जो डिज़ाइन है, फ्रेमवर्क अगर ठीक ठाक बैठा हुआ है, तो दिस इज़ नॉट अ हार्ड थिंग टू अचीव. इन फैक्ट इट इज़ अ वेरी काइंड ऑफ अ डिफॉल्ट थिंग, बट इन आवर करंट टाइम्स इट हैज़ बिकम बिट डिफिकल्ट. So, but anyway, productivity burnout से कैसे affect होती है? Because you are anyway, you don't feel energetic, you don't feel motivated, you feel exhausted, you are overwhelmed by emotions, you have a lot of emotional fluctuations, you don't feel, as I said, कि आपको एक sense of कनेक्शन फील नहीं होता अपने काम के साथ, अपने आसपास लोगों के साथ. सो डेफिनेटली वट एवर यू डू, you would not do it wholeheartedly, and that would really affect your productivity. So maybe you're slogging for 10 hours a day,
बट उधर से जो आउटपुट आ रहा है वो एक्चुअली ऐसा आ रहा है कि अगर आपने 1 घंटे भी काम किया होता, और आप लोगों ने ये देखा होगा अपने रियल लाइफ एग्जांपल्स में, अपने विष्णु यू वर टॉकिंग अबाउट आई थिंक एग्जाम्स, एग्जाम के टाइम पर, कि मैं 5 घंटे में भी पढ़ लिया हूँ और उस 5 घंटे में जो मेरा आउटपुट आ रहा है, जो प्रोडक्टिविटी है, मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, because one of the consequences of burnout is that your concentration focus is affected a lot. So if you are really concentrated, if you are focused enough, then your productivity will improve. And if you improve, if you prevent the symptoms of or the condition of burnout, your productivity will automatically improve. It's not that something ki, definitely productivity के अपने खुद के standards हैं, that one of the productivity in itself is a skill to acquire. Time management एक skill है, project management एक skill है, space management एक skill है. So there are different ways, like different ways to improve it. But if you are trapped in that vicious circle of burnout, तो आप इनमें से कोई भी स्किल लगा लो या इनमें से कोई भी स्किल मत लगाओ, यू विल स्टिल फील दैट वर्क इज नॉट गेटिंग डन. ओके, any comments? I'll take a pause. We are at the mid of the session. We'll begin with a few exercises. Key takeaways जो अभी तक हुए हैं, I'll just summarize those key takeaways, and we will do some live exercises in this session. Just give me a thumbs up, or just say if you would be interested in doing it together. I'm just trying to experiment this in my live stream. मैं आगे की जो live streams I want to make it more practical, so that ज्ञान तो हमने जो भी बात किया, it's okay, we have that and you can find that on Google and other stuff. But इसको अभी directly अगर मुझे implement करना है आज से, and what maybe those 2 or 3 practices that I need to do, then let's do it together. So if everybody is interested in doing it, just write something in comments so that I'm sure that it's okay to do it live. Okay, Charvi is saying yes, thank you so much, and Pratap is saying yes. Okay, sure. So I hope everybody would be interested in doing it. 3 key takeaways हैं. उन 3 key takeaways में से we'll be talking about 3 practices, and we'll be doing 1 or 2 live right now. बर्नआउट के बारे में 3 चीज़ों से हमें बहुत फर्क पड़ सकता है. एक चीज़ जो है very important and in fact bit difficult to do when we are trapped in that vicious circle is developing self-awareness. We talked about that there's a loss of personal identity there. Now what self-awareness in itself is a vast topic, vast concept, and it's not like कि चलो आज से चालू किया, कल से यार मैं काफी aware feel कर रहा हूँ, I'm feeling aware of myself, of my surroundings. No, we're talking on a very beginner level. I'm just telling you कि one approach is that self awareness develop होना बहुत जरूरी है. We really need to be able to identify what I am going through. मुझे अगर ये पता है कि अभी currently क्या चल रहा है, तो वो अपने आप में it's like a 50% preventive step that has been taken. Until unless you do not identify, you're trapped in vicious circle and you're feeling कि हो क्यों रहा है मेरे साथ, and you end up blaming others or your environment rather than seeing it from that perspective कि okay, actually this is the thing जहाँ से मेरे ये मेजर स्ट्रेसेस आते हैं, मेरी ये जो बिहेवियरल ट्रेट्स हैं, दीज आर कंपाउंडिंग टूवर्ड्स इट, या ऐसे ऐसे डिफरेंट चीजें. सो डेवलपिंग सेल्फ अवेयरनेस इज रियली इंपॉर्टेंट. विल टॉक अबाउट कि वो कौन सी एक प्रैक्टिस हो सकती है. Concentration, meditation are definitely there, but people try it out, and as a beginner it sometimes get difficult. हम ट्राई करते हैं और उसको छोड़ देते हैं. तो हम एक उसकी जो प्रैक्टिस है दैट इज जर्नलिंग. एंड अभी हम बात करते हैं एट द एंड ऑफ इट कि जर्नलिंग कैसे करेंगे, कि जर्नलिंग से ऐसा क्या हो जाएगा, मेरी सेल्फ अवेयरनेस कैसे, क्या लिंक क्या है, विल टॉक अबाउट इट. सेकेंड इज टेकिंग rejuvenating breaks or improving your ability to relax. That is the second point, that second approach towards reducing burnout and improving productivity. First क्या था, सेल्फ अवेयरनेस डेवलप कर लो, एटलीस्ट आइडिया लग जाएगा कि मैं अभी किस बैटल ग्राउंड में हूँ, सो दैट आई prepare for the right battle, right? Second is taking rejuvenating breaks or improving your ability to relax. Third is very simple, basic necessity of each and every one of us is sleep. बहुत ही सिंपल है, राइट? स्लीप
तो ये क्या प्रैक्टिस हुई? Sleep has become a practice in itself in our current times. To be able to sleep properly would remove a lot of problems that we go through. तो स्लीप को कैसे इंप्रूव करेंगे? लेट्स डू वन प्रैक्टिस अराउंड इट. एंड रिजुविनेटिंग ब्रेक्स और रिलैक्स कैसे करेंगे, एबिलिटी टू रिलैक्स उसको कैसे इंप्रूव करेंगे? लेट्स डू समथिंग अराउंड इट. ठीक है. एंड देन वील टॉक अबाउट जर्नलिंग एंड हाउ जर्नलिंग विल हेल्प. ओके एवरीवन, सो लेट्स गेट रेडी. हम इसके बारे में दो चीजें we'll do within this point around taking rejuvenating breaks from work. We'll do two things here. One is हमारा अभी जो major, if you're working from home or whatever, our major interface is digital, and constantly looking at either mobile screens or laptop screens causes a lot of eye strain, a digital eye strain. You should Google this out. And this causes a lot of, tension in your eye area, and that causes a lot of मतलब वो आगे जो आपके जो chances of headache हैं और chances of those eyebrows where those are every time like this, or the kind of stress that you'll see on your face or on your forehead will increase with time. Why that is happening is because your eyes are not getting to relax. Body की relaxation तो हो ही नहीं रही है, but we'll start with the eyes. What you can do to be able to क्योंकि eyes एक मतलब if you will थोड़ा philosophically if you will see, so eyes is just not a separate object from mind. Like eyes are that gateway towards mind, so anything relaxing here would relax your mind, would improve the capability or ability of mind, would give that signal कि हम relax कर रहे हैं. ठीक है. Okay, so आप जब पढ़ाई कर रहे हो या आप ऑफिस में हो, and let's say you have worked for 60 minutes or yeah, yes Mahit. So you are working, you work for some amount of time. अब आप सोच रहे हो यार एक टी ब्रेक या कॉफी ब्रेक ले लेते हैं. I would request you to try at least these breaks at least 2 or 3 times in a day whenever you are taking a break from your work or from any of your study work, if we are talking about students. ठीक है. आपको करना क्या है? Let's say you are sitting on your chairs. The one thing that you have to do, it's a complete routine. So you will not right now, but सबसे पहले हमें करना है कि हमें हमारी स्क्रीन से डिस्टेंस बनाना है. विल नॉट बी लुकिंग एट आवर स्क्रीन. सो राइट नाउ यू आर लुकिंग एट योर स्क्रीन्स. आई वुड मोटिवेट यू टू डू इट विद मी while looking at screen, but वैसे जब आप एक्चुअली कर रहे होंगे तो आपको स्क्रीन अपनी बंद कर देनी है. to follow this routine, what you have to do is you will sit straight, you will roll your shoulder backwards and open your chest and relax. Your spine is straight. Now what the signal that we are doing here is हम एक बायोफीडबैक दे रहे हैं बॉडी की तरफ से. बॉडी की तरफ से बायोफीडबैक क्या है कि एक जो स्लाउच्ड पोज है, जो हम काम करते हुए हमारे एक स्लाउच्ड पोज बना हुआ है इस टाइप का, हम अभी बॉडी के थ्रू माइंड को एक सिग्नल दे रहे हैं टू रिफ्रेश. व्हाट इज दैट? स्पाइन आपने स्ट्रेट करी, ओपन योर चेस्ट, rolled your shoulder backwards, and then you relaxed. You instantly corrected your posture. So right now body has given the signal to the mind to be active, to take a break from the work and to be active for the next activity that we are doing. Okay, so spine is straight right now. Now what is the next thing that we do here is that आईज कंटिन्यूसली जब इधर देखते हैं, स्क्रीन की तरफ देखती है, तो आई का जो मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड होता है. It is either in that mobile screen or it is in that laptop screen what you're seeing now. उसकी वजह से क्या होता है, जो आई की मसल्स हैं वो आई की मसल्स मूव ही नहीं होती हैं, तो आई की मसल्स जो हैं वो वीक हो जाती हैं, और उनके वीक होने से एक तो डेफिनेटली आई साइट के प्रॉब्लम्स तो होते ही हैं, बट what it also does is that it creates the जो eyes के through a constant burning sensation that you start feeling in your eyes, that builds on, and which is problematic in that way. तो अभी हम क्या करेंगे? We'll try to relax our eyes, cool down our eyes. What you will, and you must have seen this quite often. What you will do is you will bring both your palms together. You will rub them. Try to generate heat. And make a cup of your hands
and apply it over your eyelids. Your eyes are closed and you've applied over it. I request you to do it with me so that you are able to see that if it really helps you in some way, and then you can bring this into your routine. Okay, again, eyes closed. Rub your hands again, generate heat, and apply it over your eyes again. One more time. This time we'll keep your eyes closed. This time we'll bring the element of breathing with the action of relaxing our eyes. How we have to do it? Again, rub your hands, generate heat, and as you make cups and bring your hands, bring your palms closer to your eyes, you will take a deep breath in and let it go. Breathe in and let it go. Keep your eyes closed. What we have done right now is we have closed our eyes, we have relaxed them through the heat, and we have also included the breath to relax the rest of the body along with the eyes. So that is one. Okay, open your eyes, everyone. Okay, I'll read the comments a bit later. So this is one. This is the basic thing that you can do to take a break from your work. But if you want to continue from on here, the next thing that we would want to do is we'll open our eyes first and then close them. Just see this first and do. I'll tell you how it helps. Okay. Now again, you're sitting straight. You open your eyes wide and close them. Open your eyes wide and close them. Wide and close them. Wide and close them. Wide and close them. Now we'll blink our eyes quickly. What we'll do here is like this. And remember, right now we are doing this looking at screen. We'll not be looking at screen at that point of time. We are just looking, maybe if we are on our desk or we are looking at the wall or anywhere, but not at the screen. Okay. So close your eyes very quickly. Close it, open it. We are giving different motion to our eyes, which the digital screen has restricted. Some of you might see that tears might come or might build up on the sides of the eye. Okay. So rubbing, you can do it 2 to 3 times. This constant flapping that you can do till 30 seconds. The widening of the eyes and then closing the eyes, that you can do 10 times. Okay, great. Now comes something where a lot of you might find a difference, and this is an extension. These are called eye exercises. Very important, really very important to reduce the digital strain and the kind of burnout that our eyes face. Okay, and a lot of signs of stress that start building on your forehead or on your skin due to this, these will get eliminated, and this is really helpful for the overall body also, again, because we talked about that connection of our eyes with our mind and the kind of signal then that we are giving to our bodies. Okay. Okay, what you have to do is we will move our eyes into the directions which we have not used, which we might have not, which we might not do in regular times. ठीक है, तो करना क्या है, I'll tell you. This will take 2 to 3 minutes. So again, sit straight, spine straight, relaxed.
Roll your shoulder backwards, open your chest, and then relax. Okay. Now, from here, we'll first move our eyes up and down. And if you have been looking at the screens, a lot of screens today, I can promise you, you will find some kind of a relief. And if you find, or if you don't find, just please write in the comment box once we are done with the exercise. If you found it relieving. Okay. Okay, let's do it. Eyes up. So your neck and head are just where they are. Only your eyes are moving. Eyes down. Eyes up. When your eyes are going up, you are seeing whatever you are able to see. You are just not, it's not like you're not seeing. You have to observe what you are seeing. Okay. When you go down, try to observe what you're seeing. Go up. We're bringing in the aspect of mindfulness also with the eye exercise. These are just not like a physical exercise that we're doing. Go down, up, down, up, down. Relax. Bring your eyes in the center. Now we'll do a motion which I had not explored till I don't know. मैंने बहुत कभी explore नहीं किया था वाला motion और जब मैंने किया तब I felt very different. तो देखते हैं if you have already explored. This is the diagonal motion. So you look here and then down here. So this is the motion. Look there. So your eyes, you are looking on the right diagonal, up, left diagonal, down. And observe what you're seeing. Right diagonal up, left diagonal down. Right diagonal up, left diagonal down. One last time. Right diagonal up, left diagonal down. Okay. Okay. Now we'll do the diagonal on the other side. Left diagonal up, right diagonal down. Left diagonal up, right diagonal down. Left diagonal up. Observe what you're seeing. Right diagonal down. Left diagonal up. Right diagonal down. Okay. Bring your eyes in the center. Now we'll do on the left and right side. Move your eyes to the right. Move them towards left. Your neck will not move. Only your eyes will move. Please make sure of that. Eyes right. Left. Right. Left. Right. Left. Right. Left. Bring your eyes in the center. Close your eyes. Take a deep breath in. And let it go. Everyone is with me till now? Okay. Anybody has any questions? I'll just go through comment box and we'll continue this. There's last part of the eye exercise, which is remaining. And I'll just also do a quick recap so that everybody remembers. Okay. So Charvi said, I usually rub my hands till that black thing comes out. Till that black. Okay, black things come out. Okay, Charvi. Okay, that's okay. I think that would generate a lot of heat. Prince, will I eventually be able to do left and right diagonal at once? Left and right diagonal at once? Yeah, I think that's what we are doing. Prince, I would, if you can write that question more clearly, I'll be able to answer that. Vishnu, yes, with you. Sumit, no question. I think she meant red skin. That's red skin. Yeah, okay. Got it.
Yeah, like for the eye, will I be able to do left or right diagonal at once, like for both eyes? Oh, you're saying you're looking on the right side and you're looking on the other side. Okay. Okay. I'm not sure about it. Yeah. I tried. That may be a good, something good to try, but I don't know. I don't think I can do it right now. Yeah, that will be fun. Okay. Okay, now we'll combine all these movements right now. And tell me, when you were doing the diagonal movements, did anybody feel any sort of pain or any sort of stretch in their eyes? Um, क्योंकि ये मोशन हमने काफी टाइम से किया नहीं होता है इसका, सो व्हेन मसल्स आर मेड यूज टू इट, हम कर क्या रहे हैं आई मूवमेंट्स, हम कर ये रहे हैं कि वी आर स्ट्रेंथनिंग आवर आई मसल्स, and by strengthening those eye muscles our minds are getting massaged, those are the nerves are getting massaged, and that is relaxing for the mind and for the overall body. So this is what we are doing, more like relaxation, feeling really motivation. Yeah. Okay. Okay, Sumi, thanks. ठीक है, अब हम करेंगे इसको रोटेशन में, सारे के सारे मूवमेंट्स को एक साथ करने की कोशिश करेंगे. विल डू 3 राउंड्स ऑन द क्लॉकवाइज एंड 3 राउंड्स इन द एंटी क्लॉकवाइज. ओके, सो लेट्स बिगिन. Start with up. Bring your eyes from up towards the right diagonal, towards the right side, towards the right lower diagonal, then lower your eyes, then towards the left lower diagonal, then towards the left, left upper diagonal, and then up. So there's a rotation that we are doing, and you'll find the eyes muscles getting worked up. Again, right diagonal, right, right lower diagonal, below, left lower diagonal, left, left upper diagonal, up one last time, right upper diagonal, right, right lower diagonal, down, left lower diagonal, left, left upper diagonal, up, and relax. Okay, great. We'll do this in the other direction. Please bear with me. I hope this is being fine. Even if it is not, we have to complete this cycle of, so if you have been doing it with me, please do this complete cycle. Okay, up, left upper diagonal, left, left lower diagonal, down, right lower diagonal, right, right upper diagonal, up, left lower diagonal, left upper diagonal, I'm sorry, left, left lower diagonal, down, right lower diagonal, right, right upper diagonal, up one last time, left upper diagonal, left, left lower diagonal, down, right lower diagonal, right, right upper diagonal, up, and close your eyes, rub your hands. आइज को हमने अभी थोड़ा काम कराया है, थोड़ी एक्सरसाइज कराई है, सो लेट्स रिलैक्स देम. Rub this, let the black thing come out of hands, and apply it over your eyes. Take a deep breath in and relax. Okay. Yes, Charvi. And it is also good for hands. Basically, we're generating not energy through our complete body, through the hands. The blood circulation improves. I feel a bit dizzy because I've been looking at the screen for the whole day. So in comments, tell me how was this exercise? How did you like it? Now, just
टू टेल यू इसको कैसे करना है, हमने ये तो सीख लिया कैसे करना है, बट करना कब है और करना क्यों है ये भी हमने समझ लिया है। इसे करना तब है जब भी आप एक ब्रेक ले रहे हो, टू improve your productivity, to reduce the burnout. These are some of the steps that you will need to take to be able to relax yourself, to be able to rejuvenate yourself. ये स्टेप हमारी तरफ से है टू काउंटर द बर्नआउट, टू काउंटर डिफरेंट अदर जो एक सेंस ऑफ लेथार्जी है हमारी बॉडी में, या इन जनरल इन आर in our actions. So this not only relaxes your eyes, relaxes your mind, you're also bringing the breathing component, it also rejuvenates you. Okay, do you think we will feel instant difference? No, not exactly. It's like it's very personal to each and every one of you what how you might feel. My only point in asking is that how do you feel? बिकॉज समटाइम्स जैसे मेरी जो आईज हैं वो काफ़ी स्ट्रेन फील होती हैं, सो आई फील अ रिलैक्सेशन है. People might feel a different way over all their body because for some time they were able to go out of screen. वैसे हम स्क्रीन के सामने कर रहे थे उसका एक डिफरेंस होता है. सो या so this is something that you can involve. क्या किया था हमने, आईज को रब किया, आईज को रिलैक्स किया. ये बेसिक ब्रेक आप ले सकते हो स्क्रीन से फॉर अबाउट 5 to 10 minutes अपने टी और कॉफी ब्रेक से पहले. ओके, एड ऑन करना है, आंखें खोल आंखें बंद, आंखें खोल के आंखें बंद. उसके ऊपर एड ऑन करना है तो हमें क्या करना है, आंखें खोल के आंखें बंद, लाइक वाइडन योर आईज एंड अगेन वी आर यूजिंग आवर मसल्स. एंड द नेक्स्ट इज टू जस्ट यूज द कंप्लीट motion of the eyes in each and every direction. This is a complete package to be able to do that. Okay, give me 30 seconds please. I need to plug in my charger and I'll come back. I'll just also read the questions.